Hello students, so welcome to DCA. Today we'll be talking about an out-of-box topic, right? It's not for a particular exam. It can be related to any of the exam which you might be aspiring for, right? So those who are on this channel, or maybe if you are watching this channel, watching this video, you might be a UPSC aspirant, you might be UPSC CDS aspirant, you might be ND aspirant, you might be Air Force Group X, Y, or maybe Navy SSR, TES, JEE main kind of aspirants, right? So this is completely relevant to you. ये आप सबके लिए relevant है. So the topic is, this time 2021 is actually an opportunity for you to create this AAPDA into an AVSAR, right? So this pandemic is actually a kind of opportunity. It's disguised in blessing for students. How can you convert this? Although nobody wants this, right? So this complete scenario, complete ruckus, unwanted things, nobody wants this, but we cannot, right? You at this moment, we and you cannot help it out, whatever is going on. So what you can do to utilize this time, utilize your precious time into an opportunity. So we will be talking about how 2021 is the best time for aspirants. आपदा को अवसर कैसे बनाए, राइट? सो मोदी जी ने कोट किया था, और मुझे लगता है कि ये आज के डेट में स्टूडेंट्स के लिए वाकई बहुत बड़ा अवसर है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माय पॉइंट्स along with the 7 or 8 different angles. So let's start with those students who are right now in college or school. Let's suppose you are in 12th or maybe appearing for the boards. इस बार शायद आप पास होने वाले हो. Maybe you are in college, right? So for the last 1 year, there is no school, there is no college. You are at home. So more or less, if you have gone through the trends, अगर आप trends देखेंगे, so when we talk about any of the good exams, national level exams like IIT JEE, NEET, AVSAR, maybe NDA, maybe CDS, civil services, etc. All those national coveted exams, ज्यादातर बच्चे इसमें डमी स्कूल वाले होते हैं. डमी स्कूल मतलब maybe in class, maybe till class 10th you were in XYZ school, but later on you switched to the dummy school. You are not attending schools regularly, but attendance is going on, and you are a part of the coaching. You are consistently getting coached or working hard, practicing assignments, grounds to clear your IIT JEE, NEET, or maybe your ND exam, CDS exam, right? तो उस समय ये एक तरह से illegal था. You can say that ऐसा rule नहीं है. But आज की डेट में, in today's world, in today's scenario, this is the only rule. You have to be at home, right? You don't have to be physically present at school. पहले ये चीज अलाउड नहीं है, बट आज की डेट में यही एक्सपेक्टेशन है. समय बदल गया. आज डमी स्कूल का जमाना आ गया. फॉर द लास्ट 1.5 year, right? So that means you have ample amount of time and resources. So nobody can say you right now that you are in dummy school. Maybe you are located in Patna, but you are attending your schools in Chandigarh, right? Because you were a part of the coaching in Chandigarh. Maybe you are in, let's suppose, Maharashtra, and you are attending your school or coaching or college in Delhi. ऐसा भी हो सकता है, right? So dummy school is completely legal, more or less. आप में से काफी बच्चों ने कहीं कहीं एडमिशन लिया होगा. इट डजंट मैटर कि कहाँ एडमिशन लिया. अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द एग्जाम, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट विद अ गुड स्कोर. एग्जाम तो देना है, वो तो खत्म हो ही नहीं सकता. इट इज नेवर पॉसिबल दैट एनडीए एग्जाम और सीडीएस एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम और द आईआईटी जेईई एग्जाम विल बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द बोर्ड एग्जाम्स. ऐसा तो हो नहीं सकता. आईआईटी जेईई विल से दैट विल टेक द स्टूडेंट्स ऑन द परसेंटेज ऑफ बोर्ड्स. नो. एनडीए cannot take on the percentage of boards. No. ग्रेजुएशन परसेंटेज पे सीडीएस में नहीं होगा, आईएमए में नहीं होगा, नेवल एकेडमी में नहीं होगा. दैट मीन्स द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज यू हैव टू राइट डाउन द एग्जाम. एग्जाम कैनॉट बी डिनाइड. बोर्ड एग्जाम आगे पीछे हो सकते हैं, शायद कैंसिल हो जाए, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आज न कल होगा, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, बट होना तय है. यू कैनॉट डिनाई दैट, राइट? सो यू हैव एम्पल टाइम एंड रिसोर्स. दैट मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्स है, राइट? 24 घंटे में 12 घंटे सो लो तो भी आपके पास 2-3 घंटे घर में कुछ हेल्प कर दिया, 2-3 घंटे टीवी देख लिया तो भी 5-6 घंटे तो आराम से बचते हैं. नो कैंडिडेट कैन डिनाई दैट आई डोंट हैव 5-6 आवर इन ऑर्डर टू स्टडी, राइट? एग्जाम आना है, आप एग्जाम का वेट नहीं कर सकते. एग्जाम आपको एक टाइम दे रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है. जो बच्चे ग्रुप एक्स का फॉर्म भरा था, एग्जाम कब का होना था बट हुआ नहीं, राइट? तो यू हैव स्टिल टाइम. और ये जो टाइम है, इतना जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट, ऑन द इंटरनेट. नाउ डेज इट्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन बैंक,
राइट, इंफॉर्मेशन बैंक। इनफैक्ट बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो बहुत क्वालिटेटिव है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द डिजिटल वर्ल्ड हु आर एक्चुअली पुटिंग अप वेरी गुड कंटेंट, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं, मैं रैंडम बात नहीं कर रहा हूं। देयर आर सम गाइज हु आर डूइंग रियली वेल, जिनके नॉलेज देख के लगता है कि हाँ वाकई बहुत अच्छा है, काफी मेहनत की है, जिन्होंने काफी एफर्ट लगा है। यू हैव टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम देम एज वेल, राइट? So digital info world, now it's your lottery time. Why this is your lottery time? Reason, those who were interested in joining some written test or mock test for their exams. Let's suppose you want to write some test for the CDS IMA exam or maybe your NDA exam or maybe NEET JEE जो भी है. Nowadays test series are available free of cost because it's a digital competitive world. We remember that we used to have our CDS test series around 5,000 3 years back. But nowadays the test series is more or less free. The NDA test series though, because it's online test series is more or less free because it's competitive world. We have to prove our authenticity. We have to prove our quality. That's why it's open for all. So आपके लिए तो सब फ्री है। आप जिस टॉपिक का टेस्ट ढूंढोगे वो फ्री है, राइट? सो योर टेस्ट इज फ्री, नॉलेज इज फ्री, मोर और लेस, राइट? कुछ चीजें होंगी जो शायद कुछ पेड है। इनफैक्ट द पेड चीजें भी बहुत सस्ती है आजकल, right? If you remember 2 years back when you had to have class 12th mathematics coaching, let's suppose class 12 physics coaching in any town of India or any village of India, I am sure that at least 500 would be the minimum fees. 500 रुपए से कम में तो क्लास 12 की फिजिक्स और मैथ्स कोई नहीं पढ़ाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कहीं हो, बट एज पर माई इंफॉर्मेशन ऐसा, इससे कम क्या ही होगा, राइट? इन चंडीगढ़ इफ यू टॉक इट्स टू हाई, राइट? So at the end of the day, 11th 12th की मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको कभी 15-16 हजार 20 हजार रुपए खर्चा हो जाते हैं if you talk about the fees. But nowadays you can see that many of the portals offering 4,000, 5,000, 6,000 course, right? I don't know what they are putting up, how it is possible to compete those things in 4,000 because quality needs a backing, right? So whenever someone puts information, let's suppose we are right now giving you some assignments, it's not the effort of a single person, right? There is typist involved, there is the quality review involved, answer keys checkup involved. So there are at least 3-4 person involved behind every element we put up. In fact बाकी कोचिंग में भी ऐसा होता होगा, जो एक असाइनमेंट या दो देते होंगे उनमें काफी लोगों की एफर्ट होती है। It's not so easy, but you are getting everything in around 5, 6, 7, 7,000. That is too good actually for you. It's time for you कि आप इन चीजों का फायदा उठा सके। ये आपदा को आप अवसर में कन्वर्ट करें, ये बहुत जरूरी है। नाउ आपको सबसे एक आपके लिए जो बैड न्यूज क्या है वो आपको जानना जरूरी है। व्हाट्स द बैड न्यूज इज कट ऑफ फॉर एवरी एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड इन 2021 विल डेफिनेटली बी हाई। ये मैं आपको ऑन पेन एंड पेपर दे सकता हूं कि चाहे आप जो मर्जी एग्जाम उठा लो, 2021 के हर एक एग्जाम का कट ऑफ ज्यादा होगा। IIT JEE exam in February, you remember, in fact in March as well, JEE mains was conducted, and every time there were more than 2 candidates who scored 100 percentile. That means 300 out of 300. Physical coaching was off, school was off, only online learning was going on. सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग और बच्चा घर पे बैठा है। आई रिमेम्बर द गाय, वन ऑफ द गाय हु इज मेरे यहां से मैं बोल रहा हूं आपको, एट माई लोकेशन, मेरे से 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पे मेरे इंस्टीट्यूट के पास ही वो बच्चा रहता है। ही स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 300 इन JEE मेंस, राइट? नाउ यू कैन सी दैट कि जिनको पढ़ना है, जिनको स्कोर करना है, वो कर ही रहे हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर सीरियस आर डूइंग दैट। इज द गवर्नमेंट कंसर्न? क्या सरकार को कोई फर्क पड़ता है? क्या IIT JEE बॉडी को कोई फर्क पड़ता है कि हाँ जो बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं कोचिंग में वो तो अच्छा कर रहे हैं, बट गांव वाले बच्चे अच्छा नहीं कर रहे? नोबडी केयर्स। हु केयर्स? नोबडी केयर्स। इन इंडिया एक्चुअली नोबडी केयर्स। नोबडी केयर्स इवन इफ यू डोंट गेट ऑक्सीजन। यहां तो एग्जाम का बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1, कैसे पढ़ना है वो आप डिसाइड कीजिए। सिलेबस डिफाइंड है, सरकार ने आपको दे दिया है। एग्जाम होगा ये भी तय है, आप डिसाइड कर लो कि आपको कैसे पढ़ना और कितना मार्क्स लाना है। नोबडी विल टेक केयर, नोबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल कि पेपर कैसा है, क्यों है। ऑल्दो ऑल द एग्जाम्स इन 2021 वेर स्लाइटली ऑन इजियर मोड। चाहे आप JEE मेंस की बात करें, चाहे अभी तक जो आपका NDA एग्जाम हुआ, ऑल वेर इजी। एक रीजन तो ये भी है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। दूसरा, द वैकेंसीज आर वेरी लेस। लेट सपोज 500 बच्चे हैं, लेट सपोज रिटर्न में अगर 7-8 हजार क्वालिफाई करने हैं, अगर MNDA की बात करें, CDS एग्जाम फरवरी में हुआ,
The cutoff for the CDS exam was also high. It's 100 plus for the OTA, right? Because बच्चे घर पे थे, and those who are serious are working very hard. They are putting up mock test daily. They are putting up their practice sets regularly. और वो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सस्ते में कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं घर बैठ के. इसका मतलब कट ऑफ तो हाई जाएगा ही ना. आप नहीं कर रहे हैं, इट डजंट मैटर. नोबडी केयर्स अबाउट यू. जिनको लग रहा है एक्सक्यूजेस हैं कि हाँ हमारे यहाँ ये माहौल है, कोरोना हो गया, एक्सेट्रा हो गया, लोग निकलने नहीं दे. निकल के करना क्या है? यू हैव टू स्टडी एट होम. सड़क पे जाके तो पढ़ना नहीं है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. मन की गति को थामना होगा और पढ़ना होगा. पेन चलाओ, सब होगा. कट ऑफ फॉर ऑल द एग्जाम्स. देखो नीट की एग्जाम के फॉर्म भी नहीं आए, बट दिस टाइम ऑफ कोर्स देख लेना नीट का कट ऑफ ज्यादा जाएगा. बिकॉज जो लोग स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल की फाइल्स नहीं जमा करनी प्रैक्टिकल, स्कूल के जो XYZ काम होते थे दैट वाज रिडंडेंट, कि ये फाइल, ये डायग्राम, ऐसा करना, वो करना, फिजिकल एक्टिविटी XYZ, वो सब कुछ नहीं करना. करना क्या है? सिर्फ पढ़ना है. जम के पढ़ रहे हैं बच्चे. आप कोई मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, दुनिया भर के नंबर आए, सबके नंबर आ रहे हैं. और एनडीए का कट ऑफ भी 350 प्लस जाना तय है. वो भी मैं कम बोल रहा हूं, मुझे लगता है 360 प्लस ही ना चले जाए, राइट? बिकॉज जो 7-8 हजार बच्चे हैं, जो कि बढ़िया क्वालिटी वाले बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो अच्छा करना चाहते हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, कोचिंग, रिसोर्सेज, एंड दे विल पुट अप. हु केयर्स? आप शायद 10,000 वाले बच्चों में हो. लेट सपोज आपकी, अगर हम एनडीए की रैंकिंग दे रिटन में तो, और सीडीएस की रैंकिंग दे, तो आप 10,000 रैंक पे हो. 10,000 रैंक वाले का रिटन में ही नहीं होगा. तो आप 10,000 पे हो, चाहे 50,000 पे हो, चाहे 1,00,000 पे हो, यू आर नॉट इन द रिटन लिस्ट. दैट मीन्स यू हैव टू क्रॉस दैट बैरियर. कैसे क्रॉस करेंगे? पढ़ के, बहुत पढ़ के, प्रैक्टिस करके, क्वालिटी क्वेश्चन करके. यूट्यूब पे ये देख के तो नहीं कर सकते हाउ टू क्रैक सीडीएस. I personally feel those guys who are watching how to crack NDA, how to crack CDS, how to crack IIT JEE, these are ridiculous. You are actual बेरोजगार. Those who are watching this, the only solution, study, resources. सबको पता है यार कौन सी किताब पढ़नी है, सबको पता है ये किताब NCERT पढ़नी है. Everybody knows. I get questions almost daily. Sir, I want your geography notes. I also compile that from the NCERTs as well as some other resource book. आप भी पढ़ सकते हो. You can also do that. अरे हमने भी तो 1.5-2 साल लगाया होगा ना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्ट करने में, अच्छी चीजों के नोट्स बनाने में. इट्स द हाई टाइम. ये ही सही समय है जब आप कुछ कर सकते हैं. रिमेंबर द कट ऑफ विल डेफिनेटली गो हाई दिस ईयर फॉर ऑल द एग्जाम्स इन इंडिया. और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा. यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस. नो बॉडी, यूपीएससी भी नहीं कहेंगे नहीं आपका कट ऑफ क्या है, मुझे नहीं मतलब है, आप गांव में थे, आई डोंट केयर. वाजिब दिल्ली में जो है जितनी कोचिंग है सब बंद है आजकल, राइट? फिजिकली कोचिंग बंद है. लोग अपने गांव में होंगे. बहुत सारे बच्चे आते हैं फ्रॉम यूपी, फ्रॉम बिहार, बंगाल, दोज हु आर गेटिंग कोर्स्ड इन दिल्ली. बट सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स हैज बीन डेफर्ड टू 10th अक्टूबर. अक्टूबर में कर दिया प्रीलिम्स. आप देखना कट ऑफ फिर भी 100 प्लस जाएगी. नो कोचिंग वॉज, नो फिजिकल कोचिंग इन्वॉल्व, बट कट ऑफ विल डेफिनेटली बी हाई. इसका मतलब है कि बच्चे ऑनलाइन में भी तो सीख रहे हैं, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं ना. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये बहुत जरूरी है. आपको लगता होगा कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. वो 10,000 बच्चे जो हर एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले हैं, वो जरूर पढ़ रहे हैं. ये आप ध्यान रखिएगा, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, इट्स योर अपॉर्चुनिटी. आपको क्या करना चाहिए? प्लीज मेक योर नोट्स. आप अपना नोट्स खुद बनाएं. ये बहुत जरूरी है. जब आप पेन चलाते हो आपको एक्चुअली समझ में आता है क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं. अगर मैं आपको अपने क्लासरूम का नोट्स दे दूं, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स क्लासरूम का नोट्स दे दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक का, वो करीब 70 पेज का नोट्स है. बट आई एम श्योर दैट यू विल नॉट लुक एट इट अगेन कि आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, पेन से अजीब सा लग रहा है, राइट? सो एक्चुअल कंटेंट, जो बेसिक चीजें हैं वो सब जगह सेम रहती है. इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू मूव ऑन टू द स्टेप वाइज. गुड क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन दैट गिव्स पेन टू द स्टूडेंट. तकलीफ सहना सीखना है. अच्छा क्वेश्चन वही होता है. ये नहीं कि डिफरेंशिएट किया आंसर आ गया वो अच्छा क्वेश्चन. नो, इट्स नॉट. आई कैन नॉट आस्क यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + 1/x. ये सबको पता है आज के डेट में. नोबडी विल केयर, राइट? जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसके नोट्स बनाते हो, देन ऑलवेज ट्राई टू कीप 30 गुड रिकैप क्वेश्चन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज मास्टर क्वेश्चन. लेट्स सपोज व्हेन वी टीच द टॉपिक, लेट्स सपोज अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी फॉर द यूपीएससी बैच, व्हेन आई टीच अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, I tried it always to take 5 good questions which can revise the complete topic.
क्वेश्चन एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जो हमारी बुकलेट्स है ऐसे ही कंपाइल की गई, उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है हाँ ये चीजें आती हैं, दिस इज डन 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 डन, ऑल आर स्टेप वाइज डन। ये बहुत जरूरी है, राइट। सो व्हेन यू टू लेट सपोज यू आर कवरिंग मैथमेटिक्स, और लेट सपोज आपने कोई सा भी लिमिट्स ले लो, तो लिमिट्स से जो जितने ऑप्शन है, जितने फॉर्मूलाज है, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बाई एक्स बाई ए, जितने रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, आपने लिखा फॉर्मूला एक साइड, उसके बाद कुछ रूल्स जो आपको लगते हो नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिख लिया, राइट। लॉपिटल रूल का आपने कोई एक आध क्वेश्चन ले लिया। हर फॉर्मूला से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखो, एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू फील देयर इज सम शॉर्टकट विच यू हैव लर्न्ड, आप वो लिख लीजिए, राइट। एट द एंड यू हैव 10 क्वालिटी क्वेश्चन डन, जो आप एग्जाम से एक वीक पहले कहोगे यस डन 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 डन, इतना कर लिया, काम ओवर है। इतने में आपका स्कोर जरूर 180 प्लस आएगा मैथ्स में। इफ यू टॉक अबाउट IMA, इफ यू आर एन IMA एस्पिरेंट्स या CSAT की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है वैसे CSAT का सिलेबस तो मैथ्स में कम होता है। इफ यू टॉक अबाउट IMA एज ए होल, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स में, क्लास 7 से लेकर 10 तक सब कुछ, राइट। ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, यू हैव टू मार्क सम ज्योमेट्री ट्रेडिशनल क्वेश्चन विच आर रिपीटेड इन एग्जाम्स। आप उसका अपने कॉपी में आप शॉर्टकट्स ढूंढो, क्वेश्चंस लिखो, मेक ए लिस्ट ऑफ अराउंड 500 गुड क्वेश्चंस, दैट इज अ रिवीजन बुकलेट फॉर यू बिफोर द एग्जाम। इतना ही करना है घर बैठ के, और करना क्या है, इस समय अगर एग्जाम नहीं निकाल पाए ना, तो फिर समझना कि आगे और तकलीफ है, राइट। दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रैक द एग्जाम। मेक ए लिस्ट ऑफ रिवीजन आइटम्स, right? Like when you go through the NCERTs, you will find something in boxes, right? जैसे आप plasma is also a state of matter, right? ऐसे आप 2-4 चीज, जैसे आपने पढ़ा वो tomato contains which state, these are the things mentioned in the boxes. You have to make a list of these important items so that बाद में पूरी किताब ना खोलनी पड़े। One notebook is the master book for all the exams. That's what you need to do. Next, free resources, lottery time, practice for test or the topic mock test. As you know, we are also launching the topic wise mock test. The topic wise mock test, let's suppose you want to appear for the test of functions. We have 15 questions from the functions. You want to appear sets and relation, limits. You want to appear test for the circles, geometry. You want to have a test on the area and surface area. You want to have a test on volumes. You want to have a test on surds and indices for the IMA. Right? We are combining all those topic wise tests. Of course, they will be later on free of cost. It's the lottery time for you guys. आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, right? Next, if you want to improve your speaking skills, that's the time. You can participate in virtual GDs. I know many of my colleagues who are conducting the free, you can say more or less a free, it's 5 rupees per day kind of thing, right? Where you can participate on a Skype or the group discussion for 1 hour, right? So that is actually good. This is kind of opportunity. It's cheaper than a cup of tea. A cup of tea, एक कप चाय अगर आप पीने जाएं बाहर, I remember because I used to do that. Yesterday was the International Chai Day as well, right? It will cost 10 rupees, but you are able to participate. Chai pe charcha, right? And this will improve your speaking skills, your presentation skills, boost your confidence, and that's what required. You cannot say, believe me, if somebody says that let's have a coaching for the SSB in 10 days, 12 days, it doesn't matter. 15 दिन में how can you change your personality? They are completely dumb. ऐसा नहीं होता 15 दिन में, right? So they will tell you कि ऐसा ऐसा होता है जी। SSB में there will be PPTT, there will be a GTO task, there will be interview, you have to be well dressed, etc. etc. इसके लिए 15,000 20,000 देते हो आप वहाँ SSB कोचिंग में, right? Believe me, this thing is good. Participate in group discussions. Present yourself, present your thoughts. Try to keep learning from the other guys who are present in the session. This will help you rather than paying 50-20,000 for the SSB coaching. They are completely meaningless. अगर 15 दिन में change होना था, you can ask any of the SSB coaching. Maybe if you have taken coaching as well, go to any batch. Take let's make a list of around all those 50 guys who were in your batch or 30 guys. How many of them get selected? For any coaching, any big coaching, small coaching, etc. in India for the SSB, the percentage ratio is hardly 50:1. So even if I coach someone, if I coach 50 guys for some SSB, there is it's a guarantee that at least one will be in the list. So by default ही हो जाता है. So there is nothing in the SSB coaching. The only thing is that you need to learn how to present yourself,
राइट, बाकी सब चीजें दुनिया भर की चीज अवेलेबल है, राइट. नेक्स्ट, नोट your strength and weakness when you participate in GD test or the written mock test for your exams. Always try to note your strength and weakness. Let's suppose someone says that binomial, I am not good in binomial, I am not good in integral part, indefinite integral, that's your weakness. Please mention that. I am not able to speak up with the good vocab. Please note that. Try to enrich yourself with a good vocab. You know, it's always this is the general interview question. What are your strength and weakness? ये आपको ध्यान देना है. लिस्ट बनाए, वीकनेस बतानी नहीं है, बट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. दैट मींस SWOT एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वर्क ऑन योर वीकनेस. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ द नेशनल एग्जाम्स इन इंडिया. बट रिमेंबर, द कट ऑफ ऑल द एग्जाम्स विल बी in 221 will be high, and make sure that you are ready for this and you are converting this pandemic disaster, pandemic AAPDA, into an opportunity, into an AVSAR. It's time for you to decide, are you suffering from AAPDA or you are trying to get converted this into an opportunity. Have a good day.